Hello students, welcome to the session where we will be discussing the strategy on how you will prepare critical reasoning for CLAT 2025. I know critical reasoning ऐसा subject है जो which is difficult, I know, but it is not impossible to master the subject. So what I'll do is I'll tell you a strategy on how you can prepare for the year long on how to go about your critical reasoning subject for CLAT 2025. Before I start with my strategy, I would like to tell you that critical reasoning is not something where you cram up things, where you look into facts, or you simply hypothesize something that ऐसे करना है या इसको ऐसे ही करते हैं. There is no such thing as that. Critical reasoning के अंदर what you do is you simply read a passage and you solve the questions. Of course, the questions are based on some type of patterns. Some type of questions are already decided for critical reasoning. But ये बात भी तब बदल जाती है जब हम क्लैट 2024 का पेपर देखते हैं, राइट. इफ़ यू कंपेयर फ्रॉम द ईयर स्टार्टिंग 2020 अप टिल नाउ, अगर आप क्लैट के क्वेश्चंस देखते हैं फॉर CR, यू कैन ईजिली सी कि इस साल जो पेपर पैटर्न था, जो क्वेश्चन के टाइप्स थे, दे वर नॉट सेम एज प्रीवियस ईयर पेपर्स, राइट. सो अब ऐसा क्या करें कि क्वेश्चन कोई भी हो, लाइक टाइप ऑफ क्वेश्चन शुड नॉट स्टॉप अस फ्रॉम अचीविंग फुल मार्क्स इन क्रिटिकल रीजनिंग. As we all know that critical reasoning is 20% weightage of the whole 120 marks. That means 22 से 26 questions आपको CR के solve करने होंगे. Now while you're solving CR, you should be able to understand कि CR का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ पढ़ रहे हैं और आंसर्स मार्क कर रहे हैं, बिकॉज देर इज़ नो सच थिंग एज कि आंसर्स होंगे पैसेज के अंदर. CR is an ability to read something, understand it and be able to reason about it. राइट. तो बात करते हैं अगर क्रिटिकल रीजनिंग की स्ट्रैटेजी की, तो फर्स्ट स्टेप वुड बी लुकिंग इनटू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स. एग्जैक्टली दिस इज द फर्स्ट स्टेप दैट यू विल बी फॉलोइंग फॉर दिस ईयर. दैट इज यू विल लुक इनटू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स टू सी हाउ पैसेजेस आर गिवन, right, how variety of topics are touched in those passages and how those questions are given after that passage, right. So while looking into the passages, you can easily see that there are variety of topics that you have to read and will have to read in the coming year, so that whatever passage is given to you, आपको बिल्कुल ये ना लगे कि ये हमसे होगा या ये हमसे नहीं होगा, right. So your first step would be what? That you will look into previous year question papers to get a glimpse of this critical reasoning questions. Part 2 of the strategy would be to hone your reading skills. Exactly. Now you will be reading so much in this coming year that you will be able to read any passage that is given to you, but while reading those passages, you will have to take care that you are reading variety of topics, right? You will read some non-fiction books, you will read newspapers, magazines, articles, whatever you can lay your hand on, right? But you will have to make sure that आप बहुत सारी वैरायटी में चीज़ें पढ़ रहे हैं. रीड समथिंग फ्रॉम हिस्ट्री, समथिंग फ्रॉम जोग्राफी, समथिंग फ्रॉम साइंस, समथिंग फ्रॉम हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स, राइट, समथिंग फ्रॉम टेक्नोलॉजी, समथिंग फ्रॉम स्पोर्ट्स, समथिंग फ्रॉम बिजनेस. आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि हमें सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हर आर्टिकल की, हर सब्जेक्ट की अपनी एक लैंग्वेज होती है. स्पोर्ट्स का आर्टिकल पास में रखिए एंड यू कीप अ साइंस का आर्टिकल, ठीक है, साथ में आप पढ़ रहे हैं. यू कैन ईजिली सी कि वो दोनों सेम नहीं लग रहे. ऑफकोर्स मटीरियल दोनों में अलग होगा, लेकिन दोनों की लैंग्वेज में भी बहुत फ़र्क है, राइट. सो यू विल रीड वेराइटी ऑफ टॉपिक्स, वेराइटी ऑफ आर्टिकल्स ऑन एनीथिंग, राइट. आप कोई भी न्यूज़पेपर पढ़िए, द हिंदू पढ़ना चाहते हैं, द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ना चाहते हैं, द टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ना चाहते हैं, फॉर एनी मैटर कुछ भी पढ़िए. पॉइंट इज़ रीड समथिंग इन इंग्लिश, क्योंकि पूरा क्लैट का पेपर इंग्लिश लैंग्वेज में ही है, तो आपको इंग्लिश पढ़ने की आदत डालनी होगी. प्लस इस तरीके से इंग्लिश को पढ़ना है कि आपको चीज़ें उसी समय समझ में आए, राइट. यू आर रीडिंग इट एंड यू आर अंडरस्टैंडिंग इट एट द वेरी सेम टाइम. अब आपको बनना अगर लॉयर ही है, तो आपको पता है कि आपको एक दिन में कितना कुछ पढ़ना होगा, कितनी केस फाइल्स हैं, कितनी रिसर्च करनी होगी. एंड देर इज़ नो सच थिंग एज कि आज पढ़ लिया कल समझेंगे. नो, देर इज़ नो ऑप्शन ऑफ आज और कल. एवरीथिंग इज़ हैपनिंग इन दिस मोमेंट. सो यू आर रीडिंग समथिंग, यू आर अंडरस्टैंडिंग इट एट द वेरी सेम टाइम. तो जब CR को भी पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो पैसेज उसी समय पढ़ना है, यू अंडरस्टैंड इट एट द वेरी सेम टाइम, और आपको उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, राइट. सो वी आर डन विद 2 steps ऑफ आर स्ट्रैटेजी. थर्ड स्टेप इन आर स्ट्रैटेजी इज solving mock papers. You will be solving mock papers as many as you can in the stipulated time. In a controlled environment, ऐसा नहीं कि आधा पेपर अभी कर लिया, आधा बाद में कर लेते हैं.
ये कोई तरीका भी नहीं है पेपर सॉल्व करने का, और इससे आपको कोई फ़ायदा भी नहीं होगा. सो व्हाइल यू आर सॉल्विंग अ मॉक पेपर, टेक योर टाइम, एंड माय सजेशन वुड बी टू गो इन द टाइम जब क्लैट का एग्ज़ाम होता है, राइट? जब आप वो कर रहे हैं एग्ज़ाम उसी टाइम में, सो यू विल गेट अ हैंग ऑफ दैट टाइम एज वेल, कि इसी टाइम में 2 to 4 PM यू सिट फॉर दैट एग्ज़ाम एंड यू गिव योर मॉक पेपर. यू विल गिव एज मैनी मॉक पेपर्स एज पॉसिबल, राइट? कोई इसका फिक्स नंबर नहीं है कि 20 दे दिए, 25 दे दिए, 5, 50. नो, यू विल सॉल्व एज मैनी मॉक पेपर्स एज पॉसिबल थ्रू आउट द ईयर, राइट? एंड वेंस यू आर डन विद योर रीडिंग पार्ट, एंड नॉट ऐसा नहीं है कि रीडिंग छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं है कि मार्च के महीने तक ही पढ़ना है. नो नो, रीडिंग इज समथिंग दैट विल गो ऑन फॉर द होल ईयर, बट उसका टाइम आप ग्रेजुअली रिड्यूस करेंगे बिकॉज यू विल बी यूजिंग दैट टाइम इन सॉल्विंग मॉक पेपर्स, राइट? यू विल सॉल्व एज मैनी मॉक पेपर्स एज पॉसिबल, प्लस यू विल सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, राइट? स्टार्टिंग में हमने जब स्ट्रैटेजी की बात करी थी तब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देख रहे थे पेपर को समझने के लिए कि CR में क्वेश्चंस कैसे आते हैं. नाउ यू विल बी थॉरली सॉल्विंग दोज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स अलॉन्ग विद द प्रीवियस ईयर सैम्पल पेपर्स. यू विल सॉल्व दोज टू सी हाउ द पैटर्न हैज़ चेंज्ड and if you can attempt those questions or not, right? And last but not the least part of our strategy is analyzing those mock papers. As you are done with the mock paper, sit with the mock paper and check it. While solving the paper, this thing goes without saying कि जब आप solve कर रहे हैं, keep the reasoning in your mind why you have marked an answer, right? So when you are analyzing that mock paper, you can easily know कि वो reasoning सही है या नहीं, and it's simply not a fluke, right? There's no point in honing your skills of making fluke answers. काम आएगी आपकी reasoning. You work on your reasoning. If you are making good reasoning while solving mock papers, you can be sure while analyzing the paper कि हाँ ये reasoning मैंने सही करी है. That will make more sense, right? And that will more help you in your exam that how reasoning works for you. So when you are done with your mock papers, you analyze your mock papers, and when you are analyzing your mock papers, you will realize your strong points and your weak points. This is why analysis of a mock paper is done. To realize what is making you lacking in your marks. कौन सी ऐसे टॉपिक है जो आपको बार बार गलती करवा रहा है, बार बार आपके मार्क्स को नीचे लेके आ रहा है, राइट? सपोज आपने मॉक पेपर दिया और आपको लगा कि आपका वीकनिंग द आर्ग्यूमेंट जो टॉपिक है वो मुश्किल है, हो ही नहीं रहा आपसे. That is the topic where you will work on, right? So you will solve the mock papers, you will analyze the mock papers, and you will find your strong points and your weak points, right? This is how mock papers will help you, will seriously help you in making marks. Ultimately, it's all about how much you score in CR. I hope this strategy helps you. This 4-part strategy helps you, that you look into your previous year papers, you hone your reading skills, you do mock papers, you analyze the mock papers, and ultimately this strategy will help you fetch marks in critical reasoning. That's all for this video today. If you have any query, you can put it in the comment box. Thank you.